Hey learners, this is Dr. Rishi from the Learners Academy. We have already discussed similarity of triangles. We have also talked about the criteria for similarity of triangles in our previous video. Also, we have seen basic proportionality theorem and its applications. We have also discussed about relationship between the areas of similar triangles and similarity as size transformation and its applications on maps and models. So today, let us discuss the examples that are associated with this particular topic. In this video, we are going to cover two of the exercises from 10th ICSE. They have various different questions that we have that I found are very important according to your exam perspective. So let's go ahead and see some of these examples. So let's talk about basic proportionality theorem. So this theorem tells us a line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides proportionally. So let's see what we have here. We have a triangle like this, triangle ABC, and we have line DE which is parallel to BC. Now they are saying that this line is going to divide the remaining two segments proportionally, meaning AD upon DB will be equal to AE upon EC. So let's see how it is possible. So what is given to us? So we have triangle ABC, DE is drawn parallel to side BC and it meets AB at D and AC at E. Now we get AC upon DB is equal to AE upon EC. So we have angle ABC is equal to angle ADE. Why? Because they are corresponding angles of parallel sides. दो साइड पैरेलल है तो उनके जो ये corresponding angles बन जाएंगे. BA would be the transversal. Same way, angle E will be equal to angle C. So angle ACD will be equal to angle ACD will be equal to angle AED. Again corresponding angles. तो दो angles same है. तो and तीसरा angle A is common. So by AA postulate, these two triangles are similar. So कौन सा वाला ADE is similar to ABC और triangle ABC is similar to triangle ADE जैसे यहाँ पे दिया है by AAA postulate. अभी the next thing we have is since they are equal, they are similar, we can say that their lines are in their sides are in proportion. That is AB upon AD is equal to AC upon AE. आगे देखेंगे तो AB can be put in the form of AD plus DB and AC can be put in the form of AE plus EC. तो we get इनको separate out किया तो ये आ जाएगा AD upon AD plus DB upon AD and AE upon AE plus EC upon EE. So ये AD upon AD 1 हो जाएगा and AE upon AE भी 1 हो जाएगा. So there is 1 and 1 on both the sides, so we can cancel them out. So these ones get cancelled and we get DB upon AD is equal to EC upon AE. Taking reciprocals, they are doing inverted on both the sides, we get AD upon DB is equal to AE upon EC, which means that these lines are in equal proportion and hence the theorem is proved. Now, it is conversely true as well. This theorem is called as converse of the basic proportionality theorem. अभी basic proportionality theorem को कई लोग BPT भी बोलते हैं. तो generally exams में you should go for basic proportionality theorem instead of just BPT, but it can be used in practice and all. It wouldn't actually make a lot of difference. Now, if a line divides any two sides of a triangle proportionally, then the line is parallel to the third side. How are we going to prove it? तो ये prove करना भी काफी simple है. I would ask you people to maybe scribble it on a paper and then send it as a screenshot. You can upload it in the answers in the comments easily. I'll just tell you how it can be proved. It's a very easy trick. You draw a line like this and you take a point E dash. यहाँ पर एक E dash अगर point ले लेंगे अपन and we say that okay, DE is not parallel but DE dash is parallel. तो अगर DE dash parallel है तो automatically AD upon DB will be equal to AE dash upon E dash C. पर हमें दिया गया है कि they are in proportion, which means that AD upon DB is equal to AE upon EC, which effectively means that E and E dash are not two different points but one same point. तो ऐसा करके उसको प्रूव किया जा सकता है. It is not a very difficult thing.
So I am expecting you people to solve it and send it across. Let's go ahead with the next thing. Now we'll quickly go ahead with some solved examples and then some examples from the exercise. ये theorem काफ़ी easy है, just proportionality prove करनी होती है, पर since fractions are involved, life can get messy sometimes. So they're telling us that in triangle ABC, D and E are points on the side AB and AC respectively. Find whether DE is parallel to BC or not. तो या तो पूछ सकते हैं, अपने को साइड का रेशियोज दिया है, साइड के साइजेस दिए हैं, एंड दे आस्क यू वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, या फिर दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, तो पैरेलल है दिया है, रेशियोज फाइंड करने को बोल सकते हैं. तो वी गेट DE विल बी पैरेलल टू BC ओनली व्हेन AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन C. तो अपने को दिया गया है, अपने को AD, AE, BD एंड AC दिए गए हैं. तो यूजिंग दीज वैल्यूज we can actually find the value of AD. अभी AD दिया है 3 सेंटीमीटर, AE दिया है 4 सेंटीमीटर, BD दिया है 4.5 सेंटीमीटर एंड AC दिया है, AC दिया है. तो AE कितना होगा, सॉरी EC कितना होगा, तो इट वुड बी 10 minus 4 centimeters, so that is 6 centimeters. So we get AD upon BD is 3 upon 4.5, so that is 2 by 3. AE upon CE is 4 upon 6, so that is 2 upon 3. Since these two ratios are equal, we can see that the lines DE and BC are parallel. And the second case, AB दिया है, तो पूरा AB दिया है, A से लेके B. ये important है, आप how are you going to read it? तो A से B दिया है और BD दिया है, CE दिया है and AE दिया है. तो अभी इस वाले में अपने को AD फाइंड करना है. So we find AD upon BD is AD minus BD upon BD. और वैल्यूज डाल दिए, 7 minus 4.5, BD is 4.5 divided by 4.5, so it's 2.5 upon 4.5 which is 5 upon 9. और AC upon CE का डायरेक्ट वैल्यूज दिया गया है, तो इट कम्स टू 5 upon 8. सो सिंस ये दो रेशियोज इक्वल नहीं है, इट वुड मीन दैट दिस लाइन इज नॉट पैरेलल. So the next example we have is example number 8. We have in the given figure AB is parallel to EF, CD, AB is parallel to EF and EF is parallel to CD. Given that AB is equal to 7.5, EG is equal to 2.5 and CG is equal to 5 centimeters and DC is equal to 9 centimeters, find EF and AC. तो क्या क्या फाइंड करना है अपने को, EF and AC. ये दिया गया है बड़ी ही ट्रिकी वे में, तो यू शुड बी एबल टू टैकल इट easily. How? The first thing is by focusing on what you want to find. तो पहला EF find करना है. तो EF find करने के लिए we will have to focus only on this part. ये वाला जो part है, that is the only part that we have to focus on. तो ये part मेरे को अभी ज़रूरी नहीं है. That's why I draw a second figure here, which is about EFG और GCD. ये दो ट्राइंगल्स की फिगर है. नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, सो सो FD इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. एंड ये वर्टिक, सिंस लाइंस आर क्रॉसिंग, EC एंड FD इज क्रॉसिंग, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे. सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल EFG एंड ट्राइंगल CGD, EFG इज इक्वल टू CGD, EFG इज इक्वल टू, सॉरी, इन ट्राइंगल EGF एंड ट्राइंगल CGD, एंगल G जो है वो इक्वल रहेगा, एंगल EGF इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल CGD. Why? Because they are vertically opposite angles. And then we have angle EFG. EFG is equal to angle D. Why? Because they are alternate angles. जैसे पहले ही बताया था कि ये transversal है. So these two triangles are similar by AA test or AA postulate. So since these two triangles are similar, we can write, अभी अपने पास क्या क्या दिया गया है, तो EF दिया है, CG दिया है, DC दिया है और AB दिया है. So we have EF upon DC, तो EF फाइंड करना है, DC दिया गया है, then CG दिया गया है और DC भी दिया गया है. DC दिया गया है, CG दिया गया है, AB दिया गया है. Sorry, AB we are not going to use it as of now.
EG दिया गया है, EG. So EG है और GC भी है, so we'll use that pair. So EF upon DC is equal to EG upon GC. I put in the values. EF का EF ही रखेंगे, DC का 9 सेंटीमीटर से दिया गया है, EG का 2.5 सेंटीमीटर है एंड C का 5 सेंटीमीटर है. So effectively क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 2.5/5 टाइम्स 9, so that is 4.5 सेंटीमीटर्स एंड दैट इज द लेंथ ऑफ EF. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट. अभी मुझे AC फाइंड करना है, AC ये वाले ट्राइंगल में, तो वो कैसे करेंगे? अगेन विल मेक चेंजेस इन द फिगर. ये वाला पार्ट मेरे लिए ज़रूरी नहीं है तो इसको मैं निकाल दूंगा एंड आई विल बी लेफ्ट विथ ABC. बस ये वाला ट्राइंगल जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया है. सो आई गेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग लाइन बन जाएंगे. एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, अगेन लाइन्स पैरेलल है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C because it's a common angle. Now we have also found अपना EC कितना आएगा, तो EC आएगा EG प्लस GC. तो ये G का यहीं पर यहाँ पर गई तो था G, and I had the values of EG and GC. So using those two values, I find first EC का value, that is 7.5 centimeters. Now triangle ABC is similar to triangle EFC. क्यों similar है? AAA test. तीनों एंगल मैंने ऑलरेडी बताया है आपको. Which implies that AC upon EC is equal to AB upon EF. So AC पता नहीं है मेरे को, EF मेरे को पता है, AB मेरे को पता है, और EF भी मेरे को पता है. So I put in the values, I take the 7.5 on the other side, I do cancellation and I get the final answer as 12.5. So मेरा total answer हो गया 12.5 centimeters. So मेरा AC is 12.5 centimeters and that is my answer. Let's go ahead with the next example. This is question number 3 from exercise 15B. We have a line is drawn parallel to the sides BC of triangle ABC which cuts AB at P and the side AC at Q. If AB is 9, CA is 6 and AQ is 4.2, find the length of AP. तो AP का लेंथ फाइंड करना है इधर अपने को. AP फाइंड करना है. This is given, this is 6 centimeters. CA is 6 centimeters, so C से लेके यहाँ तक ये पूरा 6 centimeter है. Yeah, not just this part. Okay. So we have in triangle APQ and ABC, angle ACQ is equal to angle ABC. Sorry, there is a typo error here. It should be angle APQ. Angle APQ is equal to angle ABC. Because these two lines are parallel, so ये angle हो जाएगा इसके साथ equal और ये angle हो जाएगा इसके साथ equal. So we get angle APQ is equal to angle ABC. And angle PAQ is equal to angle BAC. तो दो ही करने, ये दूसरे की ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की. You can also add it, it would look better. So AAA टेस्ट से प्रूव हो जाएगा. इधर तो ये वाला प्रूव किया अपन ने और ये इसको कॉमन बोल दिया है. And that is my AA टेस्ट. ये एंगल और ये एंगल कंग्रुएंट है और ये मेरा कॉमन है. तो by a criteria of similarity, the triangles are similar. So since they are similar, we can say that AP upon PB is equal to AQ upon, since the triangles are similar, we can say that AP upon AB is equal to AQ upon QAC. So AP मेरे को पता नहीं है, मेरे को फाइंड करनी है. AB मेरे को पता है 9 सेंटीमीटर्स है, AQ मेरे को पता है 4.2 सेंटीमीटर्स है और AC मेरे को पता है 6 सेंटीमीटर्स है. So I do the cross multiplication and I end up with AP is equal to 6.3 centimeters. Now let's go ahead with the next example. Now we have a line DE is drawn parallel to base BC of, so this is question number 6 from exercise 15B. So we have a line DE, इसको draw किया मैंने. कैसे draw किया? Parallel to the base BC of the triangle ABC which cuts AB at point D and AC at point E. Now, if AB is equal to 5 centimeters, so total A से लेके B तक 5 centimeters है, and EC ये छोटा वाला part is 3.2 centimeters. Find the length of AB.
So since DE is parallel to BC, so obviously this angle is going to be equal to this angle and this is going to be a common angle. तो ये दोनों से ही अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. तो ये डायरेक्टली भी ऐसे भी लिखा जा सकता है. नाउ दिस काइंड ऑफ सम कम्स फॉर 2 मार्क्स. इसके आगे आप लिखना जरूरी है कि AA पोस्टुलेट लिख सकते हैं. नाउ since they are similar, AD upon BD would be equal to AE upon EC. AD upon BD will be equal to AE upon EC. So we get AD can be replaced by AB minus BD. So we have AB minus BD upon BD is equal to AE upon EC. Now AB is equal to 5BD. तो हमने 5BD लिख दिया इधर और BD वैसा का वैसा ही रहा and we have a BD here. A is equal to AE upon EC. So अभी दोनों में कॉमन BD निकला. We are left is 5 minus 1, so it would be 4. So we have 4BD upon BD is equal to AE upon EC. BD कैंसिल हो गए. इसको दूसरी साइड को लाए तो AE is equal to 4 times 3.2, so that is 12.8 centimeters. Now, the next thing we have is in the given figure, AB, CD, EF and EF are parallel lines. So AB, CD and EF are parallel lines. Given that AB is 7.5 centimeters, CD is y centimeters and BC is x centimeters, CE is 3 centimeters. Find the value of x and y. EF is 4 centimeters as well. So पहला हमको एक एक चीज देखनी पड़ेगी. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रायंगल BEF. इन ट्रायंगल BEF DC is parallel to EF, which means that BD upon DF will be equal to BC upon CF. So ये x है मेरा, ये मेरे को पता है. So BD upon DF is x upon 3. इसको मैंने x बोला है, BC को x बोला. So BD is equal to x and DF is equal to 3. So in triangle AFB, this side is parallel to this side. So if this is the scenario, then what we have, so the remaining sides are going to be in proportion, which means that FD upon FD upon FB, so FD upon FB is equal to CD upon AB. अभी इसको करेंगे ऑल्टरनेंडो, इसको ये साइड में लेके जाएंगे, इसको ये साइड में लेके आएंगे, तो वी गेट what they have given us, that is FD upon CD is equal to FB upon AB. Now FB can further be separated into FD plus DB, FD plus DB upon AB. तो 3 upon y is equal to x plus 3 upon 7.5, giving me triangle BFE. इन ट्राइंगल BFE, अब ये BFE को देखेंगे, BFE इसमें भी, सो जस्ट इरेज दिस आउट. तो BFE इसमें भी FE इज पैरेलल टू DC. तो BC अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन EF, same way like we did in the previous one, giving me BC upon CD is equal to BC plus CE upon EF. So that is x upon y is equal to x plus 3 upon 4.5, giving me y is equal to 4.5x upon x plus 3. Substituting 2 in equation 1, अभी 2 y के वैल्यूज मिल गया मुझे. तो यहाँ पर एक y का वैल्यू मिला, यहाँ पर एक y का वैल्यू मिला, ये y में ये वाला वैल्यू डाल देंगे. So it's 3 upon 4.5x upon x plus 3. इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. सो वी गेट 3x plus 9 upon 4.5x is equal to x plus 3 upon 7.5. क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों को and we get a quadratic equation. This quadratic equation is 22.5x plus 67.5 is equal to 4.5x square plus 13.5x, or effectively x square minus 2x minus 15 is equal to
0। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सीधा सीधा 4.5 से ऐड करके 4.5 से डिवाइड किया है। सो वी गेट सो विल डू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके मेरे फैक्टर्स आए x - 5 टाइम्स x + 3 इज इक्वल टू 0। So we get x is equal to 5 and x is equal to -3. It's a side, so can't be negative. So we'll discard this value. We'll get x is equal to 5. Substituting this value in equation 2, we get y is equal to 4.5 times 5 upon x plus 3. So that is 2.8125. This is the final answer that we have for the value of x and y. Now, let's go ahead with the next part that is there. The next question we have is question number 9 from exercise 15b. Again, the figure is pretty interesting. In the following figure, m is the midpoint. m is the midpoint. किस चीज का midpoint है ये? BC का midpoint है. Okay. Of a parallelogram ABCD. BC क्या है? Parallelogram ABCD की एक लाइन है, एक साइड है. Now DM intersects the diagonal at point P and AB produced at point E. We have to prove that PE is equal to 2 times PD. अभी फिगर में देखेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि PE will be twice as long as DP, पर अपन प्रूव करेंगे कि वो राइट है. So we have in triangle BME, triangle BME दिख रहा है आपको, triangle BME, ये वाला मेरा पहला ट्रायंगल. अभी यहाँ पर चीज़ क्या है, तो एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में तो बाय डिफॉल्ट दीज टू साइड्स आर गोइंग टू बी पैरेलल एंड दीज टू साइड्स आर आल्सो गोइंग टू बी पैरेलल. ओके, तो ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया एंड ट्रायंगल DMC है. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. तो ये मेरा D Meta will do some other color. This is not visible that much. So ये जो है ये DMC है, ये DM ऐसा हो गया और ये C हो गया. So these are the two triangles that we are considering. तो इसमें क्या है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक चीज़ है कि this is going to be equal to this, vertically opposite angles. So angle BME is going to be equal to CMD, vertically opposite. Then MCD is going to be equal to, तो ये वाला एंगल will be equal to ये वाला एंगल, because again they are alternate angles. That is MPE and BC and BM is equal to MC. The typo error here. BM is equal to MC, so the two triangles are congruent. They are not similar. They are congruent by AAS test. So it means BE is equal to DC is equal to AB. एक, दो और तीन साइड्स इक्वल होगा. नाउ इन ट्रायंगल तो होगा एक. अभी दूसरा देखेंगे, इन ट्रायंगल DCP. अभी ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. You can quickly take a screenshot of this because I'm going to erase all the green and red parts so that I can draw it for the remaining two triangles that are there. So let's take these out. So we have in triangle DCP. ये वाला ट्रायंगल मेरा पहला हो गया एंड ट्रायंगल EPA ये मेरा दूसरा वाला हो गया. तो इसमें क्या है, तो DPC is equal to APE और EPA and angle CDP ये वाला एंगल is equal to ये वाला एंगल. ऐसा क्यों, पैरेलल लाइन्स है दोनों, और ये जो है ये DE जो है वो ट्रांसवर्सल है.
So by AA criteria of similarity, these two are similar. So ये छोटा वाला triangle और बड़ा वाला triangle are similar, which means that DC upon AE is equal to CP upon AP is equal to PD upon EP, which means DC upon AE is equal to PD upon PD upon PE. That means अभी ये DC जो है हमने पहले ही देखा था कि DC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू EA. तो पहले तो अपन इसको इनवर्ट रेंडो कर लेंगे. तो EA अपॉन DC इज इक्वल टू PE अपॉन PD. So we have AE upon DC is equal to PE upon PD, or we can say that PE upon PD is AE upon DC, but AE can be replaced by AB plus EB. EA नहीं होना चाहिए, EB होना चाहिए, upon DC. So, but what have we seen prior to this, that AB is equal to DC is equal to EB. So ये दोनों का ऐड करेंगे तो ये 2DC होगा, यहाँ पर लिखा था अपन ने. सो वी गेट PE अपॉन PD इज इक्वल टू 2DC अपॉन DC, DC कैंसिल आउट and we are left with PE is equal to 2PD. That is our final answer that we had to prove. Now quickly let us go ahead with the next thing that is there. In the given figure, a parallelogram ABCD is given. Now E is the midpoint. अब ये वाला जो डाउट है ये बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बार पूछा था. That's why I am solving it here. So E is a point in AD. So we have E is on AD and CE we extend it to meet BA or AB at this point F. If AE is 4 centimeters, AF is 8 centimeters and AB as 12 centimeters, find the perimeter of the parallelogram ABCD. तो इसमें फाइंड क्या करना है अपने को, AB पता है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, एंड देन CB मेरे को पता नहीं है तो ये फाइंड करना है, और DAB मेरे को पता नहीं है तो ये भी फाइंड करना है. सो वी गेट AF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB is equal to 12 centimeter, so FB is equal to 20 centimeters. So we get in triangle DEC and EAF, DEC is equal to EAF. DEC, angle DEC is equal to angle EAF. Angle DEC, ये वाला angle is equal to angle FEA, ये वाला एंगल, इधर भी FEA होना चाहिए. They're vertically opposite angles. And angle EDC, ये वाला एंगल, since they are parallel, so ये वाला एंगल would be equal to ये वाला एंगल. So we end up with these two triangles being similar by AA test. Now triangle DEC is similar to triangle triangle AEF. DEC is equal to AEF. So DE upon AE is equal to EC upon EF is equal to DC upon AF. DC upon AF. So DE upon AE is equal to DC upon AF, but DC can be replaced by AB and AF would remain as it is. So we can say that DE upon AE is equal to AB upon AF. तो इनके तो वैल्यूज दी गई है अपने को. DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है. If I find DE का वैल्यू, then I add EA का वैल्यू and I'll get the final answer of AD. So I have DE upon 4 is equal to 12 upon 8, or DE is equal to 10 centimeters, giving me AD is equal to AE plus ED, which is 4 plus 6, which is equal to 10 centimeters. So the perimeter would be 12 plus 10 plus 12 plus 10, so that is 44 centimeters.
So that was about solving similarities and basic proportionality theorem. I have added a small worksheet in the description box. Please go ahead and solve it. In case you have any queries regarding that worksheet, you can always message us on the by scanning the QR code that is given here. If you found this video interesting, please do like it, share it with your friends, and subscribe to our channel. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.